Yes, this is the class 8 syllabus, which has been changed both in all the three subjects, physics, chemistry, as well as bio. It is written that the 6 units of the syllabus listed below will not be included in the annual exam. However, they will be necessarily a part of internal assessment. The chapters are star and solar system, earthquakes, pollution of air, pollution of water, conservation of plants and animals, crop production and its management. The inclusion of these 6 chapters as a part of the internal assessment is to be done as follows. In each of the 3 periodic tests, please include questions from these chapters in groups of 2 each. यानी कि 2 in out of these 6 chapters, two chapters in PT1, 2 chapters in PT2, and 2 chapters in PT3. Today we are going to start earthquake. That is, it is in term 1, and stars and solar system will be taught after half yearly. ठीक है, वो हाफ ईयरली के बाद है, earthquake हाफ ईयरली से पहले का है टॉपिक. So these are some changes which has been included, but the questions from all these 6 chapters will not be included in your annual exam, that is final exam. But internal assessment, the questions will come from these chapters. And when questions will be asked in internal assessment, at that time the chapter will be told to you from which chapter the question will be asked. Now we will start the new chapter, that is earthquake. Now, what is called earthquake? All of you are familiar with this word. It is a natural phenomenon. तो सबसे पहले what is called natural phenomenon, ये पहले पढ़ना है. What is called natural phenomenon? Natural phenomenon मतलब the event that is not due to human, it occurs naturally. ठीक है? And this natural phenomena is again divided into 2 parts. First is meteorological phenomenon and the second is geological phenomenon. ये natural phenomenon का 2 parts है, meteorological as well as geological. Now what is called meteorological phenomenon? Those events which are bounded by the variables that exist in Earth's atmosphere, जिसको हम लोग देख पाते हैं, meteorological, जो हम लोग, which is visible to us, that is the science dealing with the atmosphere and its phenomenon, including weather, climate, thunderstorms, cyclones, all these things which occurs in atmosphere. These all are called meteorological phenomena. Meteorological मतलब related to atmosphere. और इसका examples भी लिखा हुआ है, weather, climate, thunderstorms as well as cyclones. Now what is called जियोलॉजिकल फेनोमेना? जियो मतलब अर्थ, ठीक है, जो अर्थ के बिलो, दैट इज कॉल्ड जियोलॉजिकल फेनोमेना. नाउ दीज इवेंट्स और फॉर्मेशंस आर जनरली रिलेटेड टू द फॉलोइंग, सच एज रॉक्स और रॉक फॉर्मेशन, वाटर फीचर्स सच एज waterfalls and lakes, और रिजल्टिंग फ्रॉम प्लेट एक्टिविटीज, इंक्लूडिंग प्लेट एक्टिविटीज में तुम्हारा आ जाएगा अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस. ठीक है, आर द इवेंट्स एंड ऑल्सो सच एज इरोजन्स. तो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू जियोलॉजिकल फिनोमेना, रिलेटेड टू द अर्थ सरफेस. तो इसमें मेनली तुम्हारा आ जा रहा है अर्थक्वेक्स, दैट वी हैव टू स्टडी टुडे, अर्थक्वेक के बारे में. Now, what is called earthquake? तो earthquake, it is a sudden tremor. Tremor का मतलब होता है movement of the earth crust, which usually lasts for a very short interval of time or very short duration. Earthquake does not take place for hours. It takes place for a very short duration. And nobody can predict earthquake.
meteorological phenomenon can be predicted, what will be tomorrow's weather or climate, whatever it is, but earthquake cannot be predicted. Second point about earthquake is it originates naturally at or below the surface of the earth. जब भी ये originate होगा वो below the earth surface. Earthquakes do not occur alone. ये अकेले नहीं आता है, इसके साथ foreshocks as well as aftershocks. So first of all we should know what is called foreshocks. As the name tells, foreshocks मतलब पहले and aftershocks मतलब बाद में. तो foreshocks किसको कहते हैं? Foreshocks मतलब these are the smaller earthquakes that happens in the same place before the main earthquakes. तो foreshocks occur before the main earthquake. ये पहले होता है, which we are not able to determine or find out. ये हम लोग को पता नहीं चलता है foreshocks. तो किसको पता चलता है? Certain animals which are below the earth surface like snakes. There are other animals also such as dogs. Some birds also predicts. So some animals can predict foreshocks, and a certain, you can say, the change in behavior of the animals are seen before the main shocks. They start running here and there. So there are certain changes in the behavior of the animals during before the main earthquake. Yeah, you can say during foreshocks, because they get certain signals, seismic waves वो लोग पता कर लेते हैं. Because earthquake जब भी होगा तो उसमें जो sound release होता है, the sound which is released during earthquake are infrasonic waves. Infrasonic होता है. तो infrasonic waves or infrasonic sound are not audible to humans. ये हमारे रेंज में नहीं आता because it is less than 20 kilohertz. So when it is less than 20 kilohertz, then certain animals are there which can listen to these infrasonic sounds, and when they listen to this infrasonic sound, they change their behaviors or they run here and there, that something is going to happen. So we cannot detect foreshocks as during the main shocks or foreshocks infrasonic sound is released, which is not in the range of human beings. So the foreshocks are smaller earthquakes that happens in the same place before the main earthquake occurs. And what is aftershocks? Aftershocks matlab it is also the smaller earthquake that happens in the same place after the main earthquake occurs. जो main earthquake जो होगा foreshocks के बाद, उसके बाद once the main earthquake completes or over, after that aftershocks takes place, and it can continue for weeks or months depending on the size of the main or depending upon the intensity of the main shocks. तो जब main shocks आता है उसके कुछ दिनों तक chances बना रहता है, there are certain chances of aftershocks, और वो जो aftershocks होगा उसका intensity काफी कम होगा. It will be very less in comparison to main shocks. So these are foreshocks and aftershocks. Now इफेक्ट क्या होगा अर्थक्वेक का? व्हाट आर द इफेक्ट्स? स्वाभाविक है डैमेज ही होगा इसमें, ये कुछ कंस्ट्रक्टिव तो करता नहीं है, तो इसमें डैमेज का चांसेस रहता है. तो फर्स्ट इज इट कैन डैमेज टू द बिल्डिंग्स, ब्रिजेस एज वेल एज डैम्स. सेकेंड इज इट मे कॉज ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ, क्योंकि कोई भी चीज डैमेज होगा उसमें लाइफ का लॉस ज्यादा होता है, जान माल की हानि बहुत ज्यादा होता है. इट कैन ऑल्सो कॉज फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स. फ्लड्स भी आ सकता है एज वेल एज लैंडस्लाइड्स भी होगा, भूस्खलन जिसको हम लोग बोलते हैं, लैंडस्लाइड्स. समटाइम्स अर्थक्वेक ऑकर्स विद इन
the or beneath the ocean floor. ओशन के नीचे, पानी के नीचे भी कभी कभी अर्थक्वेक होता है. And when such type of earthquake occurs, it will lead to tsunami. Spelling is Tsunami. Tsunami. Tsunami क्या होता है, सबसे पहले ये जानना है. तो it is a series of huge sea waves which consists of high, long walls of water which moves at a very rapid rate. बहुत हाई, जैसे हाई टाइड्स होता है, लंबा लंबा ज्वार भाटा जो उठता है सी में या ओशंस में, उस टाइप का ये सुनामी होता है. वेरी हाई लॉन्ग वाटर वॉल ऑफ वाटर विच मूव्स एट अ वेरी रैपिड रेट. और उस केस में जो एनर्जी होगा वाटर में, जो वेव्स में जो एनर्जी होगा, दैट विल बी वेरी हाई. एंड दैट एनर्जी जो होगा, दैट विल डिस्ट्रॉय the coastal areas or the population which is near the coastal areas. तो सुनामी जब भी आता है तो वो कोस्टल एरियाज को ही डिस्ट्रॉय करता है, वो लैंडलॉक्ड एरिया में नहीं आ सकता है क्योंकि इट ऑकर्स इन वाटर. तो वाटर में भी कहाँ, सी और ओशियंस. तो वट एवर पॉपुलेशन इज बिसाइड द कोस्टल एरियाज, दैट इज अफेक्टेड ड्यू टू सुनामी. So the forces of these water waves can destroy the entire population or can wash away the entire city in just a few moments. ठीक है. तो whatever the population is established near the coastal areas, that may be affected due to tsunami. और इंडिया में ये कब आया था? It occurred in the Indian Ocean on 26th December 2004. Now these are some pictures of tsunami. You can see high water waves. ये कितना destructive होगा, जो भी इसके किनारे में होगा, that will be destroyed. You can see in the second picture that cars, some vehicles are lifted up by the sea waves or water waves, and the entire population near the coastal areas may be destroyed. So these are some pictures of tsunami. Now, cause of earthquake. Cause क्या? The earth crust consists of several large lithospheric plates and numerous small plates. Lithospheric plates मतलब the earth crust, नीचे earth crust के नीचे बहुत सारा plates होता है जिसको हम लोग tectonic plates भी बोलते हैं. ठीक है. That is called lithospheric plates and numerous small plates. And these plates में continuous movement होते रहता है. Some plates move towards each other, some plates move up away from each other, you can say apart, and some plates slide over each other. तो plates का movement continuous होता है. और ये क्यों movement होता है? Due to the molten magma which is present deep inside the earth crust, as well as due to the rotation of the earth also. So due to rotation of the earth, as well as due to the hot molten rocks which are present deep inside the earth crust, due to excessive heat as well as pressure, जो अर्थ के अंदर deep inside the earth crust heat और pressure है, उसके कारण प्लेट्स का मूवमेंट कंटिन्यूअस होते रहता है. ठीक है. either they move towards each other, apart or slide over each other. अब ये मूवमेंट में होता क्या है? The boundaries of these plates, जो प्लेट्स मूव करेगा उसका जो बाउंड्रीज है, they may get interlocked. अगर एक दूसरे से स्लाइड कर रहा है या एक दूसरे के करीब आ रहा है तो क्या होगा? They will get interlocked. और इंटरलॉकिंग होगा तो क्या होगा? उसमें फ्रिक्शन हो गया. And rest of the plate, however, keeps on moving. तो some plates क्या होता है? इंटरलॉक्ड हो जाता है. कुछ प्लेट्स keeps on moving. Now what happens? This causes a tension. टेंशन क्या है? टेंशन का मतलब होता है फोर्स. ये दिमाग वाला टेंशन नहीं है. टेंशन इज अ फोर्स. This causes a force to build up in the plates. तो प्लेट्स में एक टेंशन आ गया, फोर्स आ गया. ठीक है. कौन सा फोर्स आ गया? फ्रिक्शनल फोर्स आ गया. क्यों? क्योंकि वो इंटरलॉक हो गया प्लेट्स. Now when the forces of moving plates
ओवरकम द फ्रिक्शन, जैसे ही ये ओवरकम होगा force, what will happen? The edges, at the edges, the stored energy gets released in the form of seismic waves. जैसे ही ओवरकम होगा फ्रिक्शन, जैसे ही एक प्लेट दूसरे प्लेट्स के ऊपर चढ़ेगा, ओवरकम होगा, what will happen? सेस्मिक वेव्स, जो एनर्जी है वो रिलीज होगा, और वो जो एनर्जी को नाम हम लोग देते हैं सेस्मिक वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ सेस्मिक वेव्स। अब ये सेस्मिक वेव किस तरह का होगा? यू कैन you might have observed that if there is a log of water, एक छोटा सा पॉन्ड है, and it is still pond, stagnant water है, उसमें एक पत्थर मारो, जैसे ही उसमें पत्थर मारेंगे, when you throw a stone in it, you will see the ripples of water are formed. एक पॉइंट से बहुत सारा रिपल्स फॉर्म होता है, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल, छोटा छोटा सर्कल्स, लगता है कि एक पॉइंट से सर्कल्स निकल रहा है, तो उसे को हम लोग कहते हैं रिपल्स। तो सेस्मिक वेव्स आर आल्सो इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स फॉर्म्ड इन द पॉन्ड, उसी तरह का सेस्मिक वेव्स होता है। एंड दीज सेस्मिक वेव्स comes from deep inside the earth crust, where these plates overcome the force of friction, और these seismic waves क्या करता है? Vibrates the earth surface, और यही vibration को हम लोग कहते हैं earthquake। तो these seismic waves are released, कब रिलीज होगा? When the plates, tectonic plates, overcome the force of friction, and at that time the energy is released, and this energy shakes the earth's surface, and that is the cause of earthquake. Now you can see the picture of this earthquake, कैसे ये होता है। In this first figure you will see that यहाँ पर जो पहला फिगर है, ये जो फर्स्ट फिगर है, ये नॉर्मल, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखोगे मूवमेंट हो रहा है, these plates are moving away from each other, एक इधर है, एक इधर जा रहा है, shown by an arrow। अब देखोगे इसमें थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये सरफेस में थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो रहा है, एंड ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन यू विल सी दैट इन द थर्ड पिक्चर, ये जो स्पार्किंग का जो साइन दिख रहा है, दिस इज द एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन वन प्लेट स्लाइड्स ओवर द अदर और ओवरकम्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहीं पर ये तुम्हारा एनर्जी रिलीज हो रहा है when one plate overcomes the force of friction, और ये एनर्जी क्या है? यही है तुम्हारा seismic waves which is released from deep inside the earth crust। और सेकंड फिगर में देखोगे ये जो सर्कल बन रहा है, ये जो सर्कल है, यही जो सर्कल है तुम्हारा, इसी को हम लोग कहते हैं seismic waves, it is in the form of ripples। तो यहाँ पर जो seismic waves originate हो रहा है वो इस पॉइंट से रिलीज हो रहा है, ये जो रेड डॉट है, this red dot is the source from where the energy is released in the form of seismic waves, and these seismic waves gets distributed into the entire earth surface। जितना इसका intensity होगा उस हिसाब से ये spread out होगा, ठीक है, and it will shake the earth surface। This is how the earthquake occurs। Now there are certain terms which is related to earthquake। कुछ terms है जो कि earthquake से related है, that वो हम लोग को पढ़ना है। First is what is called focus। Later on, after this term, I will show you the picture of all these, what is focus, epicenter as well as fault। Focus किसको कहते हैं? तो focus, it is a point of origin of the earthquake। फोकस पर ही तुम्हारा अर्थक्वेक ऑकर करता है, ये ओरिजिन है अर्थक्वेक का, कहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है। एट विच द टेंशन इज रिलीज्ड, टेंशन मतलब द फोर्स इज रिलीज्ड और द एनर्जी इज रिलीज्ड, एंड दिस फोकस इज लोकेटेड डीप बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ये काफी नीचे होगा, 100 किलोमीटर इनसाइड होगा, या 50 किलोमीटर डाउन होगा, या 200 किलोमीटर बिलो होगा, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इट इज अ पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक एट विच द energy is released or the tension is released or the force is released,
and it is located deep below the surface of the earth crust. Second is what is called epicenter. Epicenter, I will show you the picture. पहले focus देख लो कहाँ पर है वो focus, ये देख लो. In this picture you will see the focus. यहाँ पर तुम्हारा focus दिख रहा है. ये तुम्हारा earth surface, ऊपर वाला तुम्हारा है surface earth crust, और यहाँ पर है तुम्हारा focus deep inside the earth surface. So this is the point of the origin of the earthquake. यहीं से तुम्हारा energy release हो रहा है in the form of seismic wave. These are seismic waves. ये जो circular दिख रहा है, concentric circles दिख रहा है, these are seismic waves which are released in the whole earth surface. Now epicenter देखो, what is called epicenter? Epicenter, it is a point, ठीक है, which is located directly above the focus on the surface of the earth. Epicenter inside the earth surface नहीं होगा, ये on the surface होगा, ठीक है, अर्थ के सरफेस पर होगा. और कहां पर होगा अर्थ के सरफेस पर? डायरेक्टली अबव द फोकस, फोकस के ठीक ऊपर. द सेस्मिक वेव्स मूव आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर. जो सेस्मिक वेव्स जो ओरिजिनेट हो रहा है फ्रॉम द फोकस, वो तुम्हारा एपिसेंटर से ही निकलता है, ठीक है. एंड द मैक्सिमम डैमेज ऑकर्स क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर. तो एपिसेंटर क्योंकि वही है तुम्हारा ओरिजिन, वहीं से तुम्हारा सेस्मिक वेव्स रिलीज हो रहा है एपिसेंटर से, तो मैक्सिमम डैमेज तुम्हारा एपिसेंटर पर ही होना है, सबसे मैक्सिमम डैमेज वही. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द एपिसेंटर. तो जैसे जैसे सेस्मिक वेव्स मूव करेगा आउटवर्ड, उसका इंटेंसिटी घटते जाएगा. नाउ सी द एपिसेंटर इन द फिगर. ये एपिसेंटर को देख लो, ये दिस इज द एपिसेंटर. ये फोकस है, और फोकस के ठीक ऊपर जस्ट अबव ऑन द अर्थ सरफेस इज द एपिसेंटर. और यही एपिसेंटर से, यहीं पर से तुम्हारा क्या होता है, सेस्मिक वेव्स बाहर निकलता है, ठीक है. और ये जो बाहर निकलता है तो सबसे मैक्सिमम डैमेज जो होगा वो एपिसेंटर पर ही होता है, यहीं पर मैक्सिमम डैमेज होगा, ठीक है. नाउ थर्ड इज व्हाट इज कॉल्ड फॉल्ट. फॉल्ट किसको कहते हैं? A fault is a fracture or zone of fractures between the two blocks of rocks. दो blocks के बीच का जो फ्रैक्चर होगा उसी को हम लोग कहते हैं फॉल्ट. तो फॉल्ट क्या करता है? फॉल्ट अलाउज द ब्लॉक टू मूव रिलेटिव टू ईच अदर. क्योंकि जब तक फ्रैक्चर नहीं होगा रॉक्स में, तब तक दोनों रॉक्स स्लाइड नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा. तो एक दूसरे पर स्लाइड होने के लिए फॉल्ट होता है, ठीक है. तो फॉल्ट अलाउज द ब्लॉक टू मूव रिलेटिव टू ईच अदर, एंड फॉल्ट में रेंज इन लेंथ फ्रॉम अ फ्यू मिलीमीटर टू थाउजेंड ऑफ किलोमीटर. क्योंकि बड़ा बड़ा रॉक्स होता है, तो उसका जो लेंथ होगा फॉल्ट का फ्यू मिलीमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक होगा. क्योंकि फॉल्ट के कारण ही रॉक्स एक दूसरे पर स्लाइड करेगा, एक दूसरे से लॉक होगा. तो फॉल्ट इज अ फ्रैक्चर. ये एक फ्रैक्चर है, एक क्रैक है. किसमें क्रैक है? रॉक्स में. एंड दीज रॉक क्रैक्स अलाउज द ब्लॉक्स टू मूव रिलेटिव टू ईच अदर. नाउ यू कैन सी, यहाँ पर ये फॉल्ट, ये जो लाइन दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं फॉल्ट, ठीक है. तो यही एक दूसरे पर स्लाइड करता है, एक दूसरे पर मूव करेगा, और यही फॉल्ट के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रैक आ रहा है, लैंड में क्रैक आ रहा है तुम्हारा यहाँ पर. सो दीज आर सम टर्म्स रिलेटेड: सेस्मिक वेव्स, एपिसेंटर, फोकस, as well as fault. So these are the terms related to earthquake. There are other terms also related to earthquake.